बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle JDeveloper 12c in Windows 10 InshaAllah quickly. We have Oracle Database 12c already installed. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle JDeveloper 12c को इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से। और हमारे पास Database 12c ऑलरेडी इंस्टॉल है। So first we are going to create a folder with the name JDeveloper 12c. सबसे पहले हम एक फोल्डर बना रहे हैं JDeveloper 12c के नाम से। Now we cut the JDeveloper files which is already downloaded. अब हम कट कर रहे हैं JDeveloper की ये दो फाइलों को और इसको पेस्ट करेंगे इस फोल्डर के अंदर एंड पेस्ट इट टू दैट फोल्डर। नाउ सेलेक्ट बोथ ऑफ फाइल्स, दोनों फाइलों को सेलेक्ट कर लें। राइट क्लिक करें एंड सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फाइल ऑप्शन और एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें so that it will extract all the file in that specific folder। तो ये इस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर ये तमाम फाइलें एक्सट्रैक्ट कर देगा। फाइल हैज एक्सट्रैक्टेड, फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। नाउ वी रन दिस फाइल विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। अब हम ये वाली फाइल चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स के साथ। नाउ हिट नेक्स्ट बटन। अब नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। I do not want to receive any security updates, so we'll hit next button। में security updates नहीं लेना चाहता, next का बटन दबा दें। Define your Oracle home for JDeveloper और for Oracle Fusion Middleware। अपना Oracle home बता दें। Oracle Fusion Middleware के लिए या Oracle JDeveloper कहते हैं। So I am creating a new folder with the name JDeveloper 12c। मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ JDeveloper 12c के नाम से and this is my Oracle home and that will be my Oracle home। Hit next button। Now hit next button दबा दीजिए। Install JDeveloper, hit install button, install का बटन दबा दीजिए। Now hit next button। Installation has completed। Next का बटन दबा दें। Installation हो चुकी है। Now the option will be start JDeveloper with default setting। hit next button, option start JDeveloper with default setting होगा। finish का बटन दबा दीजिए। select studio developer which contain all features and hit OK button and leave it as it is if you want to appear this window again and again। स्टूडियो डेवलपर ऑल फीचर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ओके का बटन दबा दें और इसको ऐसे ही छोड़ दें। अगर आप ये चाहते हैं कि ये विंडो बार बार आए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये विंडो दोबारा बार बार ना आए तो इसको अनचेक कर दें। इफ़ यू डू नॉट वांट टू अपेयर दिस विंडो अगेन एंड अगेन देन अनचेक दिस।
Studio JDeveloper 12c is available. Studio JDeveloper 12c available हो चुका है. Hit SQL worksheet option. इस SQL worksheet के option पे क्लिक करें. Now hit plus button. Hit plus का बटन दबा दीजिए. Now define your connection. Define your connection name, username, password, and set from your choice, and port as well from your choice. Connection name, username, password, set और port आप अपनी मर्जी से बता दीजिए जो आपकी है. Connection type will be Oracle JDBC. Connection type Oracle JDBC होगा and driver will be thin. और driver thin होगा. मेरा user HR है. Now hit test connection button. Test connection का बटन दबा दीजिए. Test success. Hit OK button. Okay. Now hit OK button. It is available. Now you can run the query here as well. अब आप यहाँ पे query भी चला सकते हैं. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.